Assalamu alaikum class 6. I hope so all of you are fine by the grace of Almighty Allah. This is your geographies class. I am Miss Nabila and I am welcoming you in lecture number 10 of the Suffah Islamic school system online classes. Okay students, as you know that we have started our unit number 2, which is related to the mountains, plateaus and valleys, and we have done 3 questions till date. Today we are going to do question number 3. We have done 2 questions which were of what are mountains, and we have described the types of mountain in the last lecture. Today we will see how mountains can affect human life. Okay, all the landforms and all the things that are present on the earth, you should have this thing in your mind that they are always has an effect on somebody's life. उनके कोई ना कोई असरात होते हैं. Okay, the mountain, which is a very important landform, today we will see how it can affect a human life. Okay, for writing the question, please write how can mountains affect human life. इंसानी ज़िंदगी को किस तरह mountain जो हैं वो affect कर सकते हैं. It's your question number 3. Then divide your page into 2 columns. The first one will be effect of human life and the second one will be definitely of the explanation of the heading. Okay, I hope so you have started writing. I am going to dictate you up. You have to listen and understand the lecture carefully. The first heading is weather and climate. Weather and climate. Explanation. Mountains can change the weather, making it cooler and wetter. How is it possible? Yes, we know that mountains are having different plantation or trees at the top, and we have also seen this thing and we know this thing that these greenery and sort of height, it can affect और इट कैन अट्रैक्ट द क्लाउड. सो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है वहाँ पे डेफिनेटली ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पर क्लाउड्स जो हैं वो ज़्यादा गैदर हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली मौसम बहुत कूलर हो जाता है. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज़ वाटर सप्लाई. पानी सप्लाई करते हैं. Mountains provide fresh water from rivers and melting snow. Yes, we know that mountains are of great height, बहुत ऊंचे होते हैं, and mostly the mountains are covered with snow all the time, and when the sun heats them up, that snow melts and that convert into rivers, and that river provide fresh water to the people. Okay, the third thing is recreation. I have told you this point. Recreation means लुत्फ़अंदोज़ होना किसी चीज़ से, इंजॉयमेंट करना. पीपल इंजॉय एक्टिविटीज़ लाइक हाइकिंग और कैंपिंग इन माउंटेन. डेफिनेटली लाइक नाउ डेज द पीपल आर enjoying this activity. They move towards the northern areas of पाकिस्तान, जो हमारे जो से बहुत खूबसूरत इलाके हैं. गिलगित है, चित्राल है, वादी कागान है, वादी नीलम है, मरी है. ऐसे एरियाज़ में लोग चले जाते हैं और फिर जो उनके माउंटेन्स हैं उस पर हाइकिंग करते हैं और उसके ऊपर कैंपिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं. नंबर 4 इज़ लिविंग कंडीशंस. रहने की कैसी हालात होते हैं माउंटेन में, हम देख लेते हैं. व्हाट डू यू थिंक लाइफ इन द माउंटेन, द पीपल हु आर लिविंग इन द माउंटेन, देयर लाइफ विल बी ईजी और डिफ़िकल्ट? Definitely, it will be much difficult and challenging. Living in mountains can be challenging due to steep slopes and cold weather. The people who are living in the mountains in the nearby areas, you might have seen that the people are having home in the lower part of the mountain. So the weather over there is too cold because of the snow, because of the heavy clouds most of the time of the year, and as there are slopes at both ends of the mountain, the life over there, the transportation, the people to survive, to move, to walk on the daily basis, rainy season, everything is so messy, and the living condition in the mountain is very difficult to live. Number 5 is natural resources. Yes, कुदरती वसाइल. Mountains have valuable resources. Mountain के अंदर बहुत से valuable कीमती resources होते हैं like minerals, forests and pastures. ओके, मिनरल्स मादनियात, जो हमारी कुदरती मादनियात होती हैं लाइक हमारी कोल, डिफरेंट जेम स्टोन्स, लाइक वी आर हैविंग
the gas facility, all these things, sometimes different minerals, different marble, these all things are coming from mountains. And forest, definitely junglat. And pastures mean चरागाहें, means the land covered with grass for grazing animals. ग्रेजिंग एनिमल्स, जानवरों की जो चरने के लिए घास प्रोवाइड होता है, जो मुख्तलिफ लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने एनिमल्स पाले हुए हैं, तो उनके खाने का भी बंदोबस्त जो सा है वो माउंटेन से ही हो रहा होता है. द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैरियर्स. We are having barriers in Wakent. Barrier number 1, barrier number 2, barrier number 3. What is basically the purpose of the barrier? Yes, it provides us a protection. ये हमारी हिफाजत के लिए होते हैं, ठीक है. तो mountain also work as a barrier. Now we will check out how it work as a barrier. Mountains can make a defense boundary. Yes, जिस एरिया में mountains होते हैं, mountains को क्लाइंब करके दूसरे एरिया पे अटैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत टफ़ होती है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है. तो मुल्क के जिस हिस्से में भी माउंटेन्स होते हैं ना, वहाँ से कंट्री हमेशा सेफ़ साइड ही होती है कि दूसरी कोई भी कंट्री जो है वो वहाँ से इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकती. माउंटेन्स कवर करके आना बड़ी मुश्किल बात है. तो माउंटेन्स वर्क एज अ डिफेंस बाउंड्री. माउंटेन्स कैन मेक अ डिफेंस बाउंड्री फॉर कंट्री सेफ्टी. येस, वो एक डिफेंस बाउंड्री के तौर पे काम करते हैं, ठीक है जी. ओके, दैट्स एंड फॉर टुडेज क्वेश्चन. आई होप सो दैट यू विल राइट इट डाउन नीट एंड क्लीनली, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी कंपल्सरी to listen the whole video. Many of the students are just taking the screenshots and they are writing, but they are not listening what actually I am telling you. As this work will not going to be repeated, ये काम दोबारा नहीं होगा, तो it is very important for you to see the whole video that I am presenting to you, and I am delivering a complete lecture about that topic in the video. Okay, so you have to see the whole video and you have to understand the lecture. Okay, that's and for today.